हम्म, इंटरव्यू कैसे हो जाए। Good afternoon. Am I audible? Am I audible? Devendra, you are not audible. You are audible, sir. You are audible. Yes, thank you. So let your friends to join. सर हम लोग लैब गूगल क्लासरूम नहीं है सर। लैब गूगल क्लासरूम नहीं है, वो गूगल क्लासरूम जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है उसी में ही एक लैब का कंटेंट है। आप देखिए जाकर। तो अपलोड भी उसी में करना है सर, स्कैन कॉपी? हाँ, स्कैन कॉपी यहीं पे अपलोड करोगे। ठीक है सर। या फिर मैं एज एन असाइनमेंट अगर यहाँ पर दूं तो आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हो ना, लैब का। यस सर, जैसे हर क्लास का सर लैब का अलग से गूगल क्लासरूम होता है, तो लैब वाला अलग से सर सब लैब का अलग है ना? में भी हमको लगा आप भी कराएंगे। अच्छा अच्छा, यस सर। ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो आज अपलोड नहीं करो, ठीक है? देख लेता हूँ, yes, अगर अगर ये अलग से लैब में करने से ज़्यादा आसान होगा तो आई विल डू दैट। यस खोजने में भी, और अब वीडियो भी जल्दी मिल जाता है आपका लिंक। ओके, वीडियो के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लिए तो वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, तो उसका तो आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन ना, अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हो तो ये वीडियो के लिए इशू नहीं है। यस सर। वीडियो के लिए कोई इशू नहीं है, आप सब्सक्राइब किए हो तो आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा, अपलोड होगा तो। और मैं रेगुलर बेसिस में एक वीक का उसी वीक में अपलोड कर दे रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी आपको वीडियो के लिए। हेलो सर। यस विष्णु। सर सर्किट डिजाइन का कौन सा मतलब वेबसाइट बताए थे? I have already shared in that link in Google Classroom. ओके सर। गूगल क्लासरूम में जाकर देखो, वहां पर लिंक शेयर किया हुआ है। फिर मैंने पहले शेयर नहीं किया था, मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। आई हैव शेयर्ड दैट लिंक टुडे आफ्टर योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास। आई हैव शेयर्ड दैट। Okay, so I am just opening that link. Where is that link? Just wait for a minute. Just wait for a minute. Okay. Screen.
Is it visible? Virtual lab is visible? So the page of virtual lab is visible? Yes, sir. Okay. So I think, so anybody of you have gone through this page after your last lab? Yes, sir. So I think all of you have seen this. Okay, let me go through the simulation part. Okay. I will say randomly name of any student, and he or she will do that. So सो आप में अच्छा ये मोबाइल में आप ऑपरेट कर सकते हो? Anybody who is operating this website in on your mobile phone, is it possible? Yes, sir. Okay. Yes. So I am saying the name of the student. He will share his screen. Okay. Okay, let me pause recording. Stop recording for a minute. Just wait for a minute. Stop share. Okay. Akash, Yes, sir. please open that page and share your screen. Okay, sir. Sir, I'm unable to share my screen. Only host can share. Okay, okay, okay. Now see Akash, whether you are able to share a screen. Yes, sir. Okay. Akash, unmute yourself. Yes, sir. Am I audible? Yes. Just a second. So my screen has been shared. Yeah. We can Okay, see your screen. Open that page of virtual lab. Yes, good. So go to okay, and get yes. So tell your friends that how you are doing that. Okay, so good afternoon, everyone. So basically, we are going to do the very first experiment, which is
verification of truth table of logic gates. And we all know that there are total 7 gates. 3 of them are basic. So I'm going to start from the very basic, and I'm going to discuss about the AND gate. Here you can see that there's a button in green box. It's instruction. So you can read the instruction by going through the button, or I think means I have read this instruction, so I can explain it. So very first, as you can see that there's a battery, uh, and the specification of this battery is 5 volts. So first of all, you have to connect that battery just by touching on the battery like this. Now your battery got connected, and a message has flashed on the screen. It's connected. Now the second step is you have to switch on the switch number 1, which is here as you can see. So I already switched on the switch number 1, and as you can see that when switch is on, then a green mark is showing through the wire. That means the this voltage source, whatever it is giving the energy, is traveling through these wires. And if I switch off this, I don't know why this switch is not working properly. Now, okay, let it go. And you can see that there are 2 more switch number 2 and switch number 3, and there is a LED connected here. When this LED is off, you can see this LED in black color, and when it will be on, uh, means when it will glow, then it will be in a red color. So AND gate, basically in AND gate you have to operate, you have to switch on both the switches. In that case, your LED bulb will glow. So let's perform it. So I'm switching on the switch number 2, and as you can see that as the switch 2 has been connected, means I have switched on, but LED is not glowing. That means current is coming through switch switch number 1, but is not reaching to the LED bulb. So to glow a bulb, you must have to switch on both the switches. Then only your LED will glow. So is it visible? Yes, it is visible. So as I switched on both the switches, then you can see that the LED bulb has it starts glowing. Means its color has been changed. It's now red color. And I have if I have switched off any of the switches from switch 1, switch 2, and switch 3, then bulb will not glow. And now this time you will see that there are some red marks. Basically, these red marks are denoting that current is not flowing through these wires. And if again I connect this switch, then current is flowing, and these red marks are replaced by green marks, and the bulb will start glowing. This is the very first simulator. Here we have to discuss the 2 simulators. This is the practical design or practical circuit which we can perform. And in second simulator, as you can see that top left corner, there is simulator number 2, and I'm going on simulator number 2. So now there is it is just a theoretical part. As you can see that there are 2 inputs named A and B, and there is one output. And obviously you all know that is this symbol which looks like alphabet something like D. This symbol stands for the AND gate. You have to just put some input, means you have to put the input only in 0 or 1, and according to you what will be the output, you have to put it here in this box. And now you, and again you have to check that it means your given output is correct or not. You have to click on the button. So just perform this on switch means in input. I'm going to
In first input I have given the value 1, and then second input let it be 0. So now according to myself, if we all know that the correct answer will be 1, but if I don't know and I have to check my answer, I'm putting the value 0 in the output, and later means we have to check the output is correct or not. I think now this time output is correct because I have already put a 0. This time you can see that output is correct. That means when just a second. And you can see that when input A is given 1 and input B is given 0, then output will be 0, and I have already put this output and I got correct. Means whatever I have done is correct, and to verify again I have to means means number of times you can change your inputs, and by this way you can check that whatever you are doing is correct or not. And again you can just print out this either by clicking on the button here, or uh, or you can reset from a button given in the lower left corner. So you can do both of these things. Just you can print from here a button given, or here is the reset button. So this is all about the very first experiment. Yes, Akash, very good. So you have explained it in a very good way, in a very good manner. So thanks a lot. I think you have done your level best. Thank you, Akash. So So can I stop my? yes, yes, Yes. yes, yes. Okay. Yeah, very well. So is there anybody else who can explain the other gate? Anybody else by yourself? Raise your hand voluntarily. So whoever want to explain the other gate, about other gate, can raise your hand. Nobody. Okay. Purnima Kumari. Purnima. Purnima, are you there? So whoever will not reply, I will make him or her absent for today. And you know very well that in lab, it is very much necessary to be present. So because there is good marks in attendance itself. So, Purnima. Yes, sir. Yes. So, Sir, next time I will try. क्या बोल रहे हो? Sir, I said that next time I will try. Today. Okay. So anybody else? You, because why? What is the need of this type of thing? That और इसकी रिक्वायरमेंट भी है आपको, क्यों? क्योंकि so that you can explain any topic or anything by yourself, and which will enhance your confidence that you can tell anything about something, about any topic or whatever is topic given to you. So it will help also in your interviews or in presentation like that, because
You have to be prepared for that from these semesters itself. क्योंकि आप फाइनल ईयर में जाकर प्रिपरेशन नहीं करोगे कि आपको 10 लोगों के सामने कैसे बोलना है और नहीं बोलना है. You have to start from here itself. Okay. Anybody else? ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलो. ये मैं बॉन्ड नहीं लगा रहा हूँ कि आप इंग्लिश में ही बोलो. आप हिंदी में भी बोल सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो. और ये कोई हार्ड या हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोलो, इंग्लिश में बोलो या. ओके. सो विष्णु, Yes, sir. ओके. सो प्लीज. Okay, sir. I am trying. यस, ऑब्वियसली आपको ट्राई करना होगा, क्योंकि अभी आप जिस सेमेस्टर में हो ये अभी आपका बिगिनिंग है. आप 4th सेमेस्टर में ऑलरेडी आ चुके हो. 2nd ईयर आपका जा रहा है. 3rd ईयर फाइनल 3rd ईयर कंप्लीट होते होते आपका कैंपसिंग स्टार्ट हो जाएगा. आप लोग देख भी रहे होगे आपके सीनियर्स प्लेस्ड हो रहे हैं 1 by 1. सो आपको अभी से ये अपने आप को शो करना है दैट यू कैन डू इट सेल्फ, यू कैन डू इट योर सेल्फ. ओके विष्णु, शेयर योर स्क्रीन. Are you able to share your screen? Sir, host, please make host me. हाँ, मैंने तो परमिशन दिया हुआ है. यू कैन शेयर. Vishnu, unmute yourself. Yes. Yes, we can see your screen. Sir. It is visible. Yes, Hello? it is visible. It is visible. Yes. So can you explain? So which gate you are going to explain? OR gate. I am explaining or get. Okay. Okay, 1 minute, sir. So update is required, I think. Yes. Yes, it is visible. It is visible. Here you can see switch A and switch B and diode 1, diode 2, and 1 resistance and 1 LED and 1 battery. Here or logic gate is or logic gate circuit is here. Here battery is 5 volt and resistance is 1 kilowatt and diode is diode D1 D2 is code here. You can see here, and I am बैटरी को जोड़ रहे हैं. Okay, sir. I am battery connected with the circuit, and I am switch first switch A. I am off. So you can see LED will be glow, and here is working, and this is a OR gate. That means one switch on, so current is always pass. You can see, and also another switch on, also true, and bulb is glow. You can see here, and I am both are switch off, and battery LED and is switch off.
you can see here, and that's all. Then thank you, sir. That's all. Yes, yes, yes. Good, good. You have tried very well, Vishnu. Thank you. Okay. Yes, you have tried very well, Vishnu. Okay, sir. I'm You, yes, yes. You need to continue these things. Okay, you can unshare your screen. You can unshare your screen. You have to do some practice because your sentences are not complete or not complete when you are saying something. So don't bother about this. Don't bother about this. You just need some practice. So because you have to face interviews as well. So day by day, it will be come out. Okay. So anybody else? Whoever is presenting over here, I am marking for them as well here, just for my future reference, that whoever is explaining well, I am marking it as out of 10. Okay, just as a reference, I am taking for my future reference that whoever is explaining or who needs somewhat feedback. Okay, so yes, next. So इन सभी चीजों के लिए आपको खुद से आगे आना होगा, क्योंकि आपको अगर कुछ सीखना है या बताना है तो you should have to come forward. Anybody else? आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, हिंदी में एक्सप्लेन करो. Yes, Rajesh, very good. Yes, sir, I will explain it. Yes. Not get. Okay, okay, good. Sir, make me host. Yes, you are. You can share your screen. Sir, actually, I have not attended the last class, but I will try my level best. No, yeah, there is no need, because these are very basic things, and you have already studied all these things in your 11th or 12th class also. Sir, is my screen visible? Yeah, just wait. Yes, it is visible now. Yes, sir, thank you, sir. Yes, it is visible. Yes, it is visible, Vishnu. Sorry, your name is Rajesh. Yes. Sir, First of all, tell us that what is the property of a NOT gate? sir, simply it reverse the operation. That is, if we give 1, then it give us 0, and if we give 0, it gives 1. That is, sir, it simply reverse the operation. Yes, very good. Here, sir, first of all, we connect the battery, sir. Yeah, Here, by switching it, click on the battery. yeah. Then, sir, I will explain it in the next lecture. Actually, I have not attended the class, sir. इसमें कोई इशू नहीं है. आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा है, isn't it? Yes, sir. आपने जब ये Yes, sir. यस आपने जब ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो ये तो एक बेसिक एक सर्किट है, छोटा सा सर्किट है. आप इसमें कुछ भी बता सकते हो. स्विच ऑन करना है, देयर विल बी सम, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर से करंट कब पास करेगा, जबकि यहाँ बेस में आए. बेस में जब तक पावर नहीं आएगा तब तक यहाँ से करंट Yes. नहीं होगा, है ना. सो you are very much familiar with the transistors also, because we have studied in basic electronics. Then
Class. After switching the battery, we have to switch the first switch, Yes. and the sir light is glow on. So So आप अपने स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कीजिए क्योंकि आप पिक्चर कट हो रहा है. सब सही है. ये ओके, ये राइट लेफ्ट हो रहा है. यस 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 यस, थोड़ा सा नीचे करिए स्क्रीन को. ओके, यस, इट इज गुड नाउ. सो sir, I will explain to you in the next lecture. ओके ओके, चलो ठीक है, नो इशू. सो यू हैव ट्राइड दैट मैटर्स. यू हैव ट्राइड दैट मैटर्स. Thank you, sir. यस, आप अनशेयर करो. Sir. Am I audible? I am not audible, Devendra? Yes, sir. Yes, sir, audible. Okay, so unshare yourself. Yes. Thank you, Devendra. क्योंकि सबसे पहली चीज जो है कि आपको ट्राई करना होगा, क्योंकि जो ट्राई करेंगे वही तो सक्सेस पाएंगे. सो सबसे पहली थिंग है देवेंद्र. ओके, गुड देवेंद्र. So Devendra, are you going to explain it? Devendra, am I audible? Unmute yourself. Sorry, sir. Yes. Screen is visible, sir. Yes, right. It is visible. I want to explain, sir, OR gate. Okay, let First, it I open the simulator. open that first. Yes, sir. I'm going to explain OR gate, sir. OR gate. Okay. Sir, as we know the property of OR gate, the output is true if either or both of the output are true. At least input one or must be two, must be one if you want to a true output. तो सर अगर हम लोग और सर कि हम लोग को अगर आउटपुट ट्रू चाहिए तो उसमें कम से कम एक इनपुट रहेगा वो ट्रू होना चाहिए. एक इनपुट का ट्रू होना मस्ट है. अगर दोनों अगर इनपुट फॉल्स है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा सर, यानी आपको आउटपुट 0 मिलेगा. तो सर यहाँ पे सिमुलेटर में देख सकते हैं
Okay, first of all, we connect the battery with the circuit. बैटरी कनेक्टेड सर। और सर हमने यहाँ पे स्विच देख रहे हैं कि 2 स्विच है, ये पैरेलल कंडीशन में लगा हुआ इस सर्किट के साथ। तो इसका मीनिंग यही होता है कि इसमें से कोई वन भी अगर चालू करते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा सर, कंप्लीट हो जाएगा सर। तो फर्स्ट स्विच ऑन किया, देवेंद्र बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चल रहा है? ये सर 1 मिनट सर। सॉरी सर। तो सर हमने यहाँ पे देखे कि स्विच 1 स्टार्ट किया तो बल्ब और बैटरी Battery has been connected. Battery is connected. यस सर। जैसे स्विच 1 अगर स्टार्ट है सर तो हम लोग वो बल्ब ग्लो कर रहा है सर, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया। अगर स्विच 2 अगर हम लोग स्विच 2 को अगर सर स्विच ऑन नहीं करते फिर भी हम लोग का बल्ब ग्लो करेगा, और स्विच 2 को भी अगर हम लोग ऑन कर देते हैं फिर भी ये ग्लो करेगा। तो इसका मीन्स यही है कि अगर इनपुट में एक भी ट्रू आएगा तो हम लोग को आउटपुट मिलेगा। तो सिमुलेटर 1 हो गया सर। आप स्क्रीन का साइज थोड़ा कम कर सकते हो स्क्रॉल करके। नहीं सर, वो जूम आउट नहीं हो रहा सर, जूम इन नहीं हो रहा है। डेस्कटॉप मोड करो हो जाता है। फोन में सर जूम आउट नहीं। डेस्कटॉप मोड करिए, जैसा विष्णु ने कहा है डेस्कटॉप मोड में करिए, आप वो कर पाएंगे। बिकॉज आकाश has also done it. यस सर। यस सर। तो फर्स्ट सिमुलेटर हो गया सर। सेकेंड सिमुलेटर में हम लोग देखते हैं, इसमें इनपुट देखते हैं कि क्या आता है, मतलब हम लोग का सर्किट जो था वो ट्रू था कि नहीं था। तो फर्स्ट में अगर हम लोग जानते हैं कि और गेट में कि अगर हम लोग 0-0 दोनों डालते हैं, फॉल्स दोनों में कर देते हैं, हम लोग का फॉल्स ही आएगा। यहाँ पे ये चेक करते हैं कि ट्रू है फॉल्स। तो ये सर हम लोग का करेक्ट है, यानी दोनों अगर सर्किट में इनपुट अगर सर 0 हुआ यानी फॉल्स हुआ तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी आउटपुट आपको 0 मिलेगा। अगर दोनों को 1 करते हैं यानी ट्रू करते हैं दोनों को, तो यहाँ पे हम लोग का आउटपुट ट्रू आएगा सर, यानी 1 आएगा। चेक कर लेते हैं, पर यहाँ करेक्ट आ गया। और सर इसका प्रॉपर्टी है कि एक भी अगर ट्रू हुआ दूसरा फॉल्स हुआ फिर भी ट्रू आएगा, तो उसको भी चेक कर लेते हैं सर। एक को 0 कर देते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता है सर। तो ये भी सर करेक्ट हुआ। तो इससे पता चलता है कि और गेट में दोनों गेट मतलब दोनों इनपुट का होना जरूरी नहीं, एक इनपुट भी अगर ट्रू है तो सर्किट कंप्लीट होगा यानी आउटपुट मिलेगा सर। थैंक यू सर। गुड। So I think class will over now. So all of you have to join again. Yes. So who will be the next one to explain? Is going to explain? Sir, with your permission, I can explain not get. Okay, Shivam. So rejoin the class again and start your screen sharing. Okay. Okay, sir.